pass out like us, right? Alumni and all. So whenever you are interested into getting into internship through college or someone, the best way is to get from someone in the industry whom you can connect with for internship. Now, it could be that you don't expect any paid internship, don't have that. Go for experience, okay? Because sometimes people think, or the students think, that I should be paid if I'm getting. I would say that's not the right way to approach. You see what knowledge you can get from that. So keep the internship, the stipend aside for now. If you get, it's fine. But go get a good connection with your alumni who can help you in this. Okay, there are people who can at least arrange for your internship. Some of them have started their own entrepreneurs, so who have started their own companies, they can help you. So in my opinion, working through your networks, okay, is the best way to get internship. Because if you approach directly to some company where thousands and nowadays lakhs of students approach, so you're one among them. It's very hard to get through that channel. But if you get through your alumni or any other your ex-students or some that network, it's better and it becomes an easier for you. Thank you so much, sir. Since you are from CSC, Computer Science Education, as you mentioned that it's network. You are fortunate enough today that so much of information is available on the web. Okay, you know the ChatGPT, and when this AI is coming, you will get everything on the web now. So when you connect physically also, but offline also or online, you can say that there is so much of data and so much of information is available on the platform, basically online. When we started our career, that time there were no such information were available. Everything we asked to learn from ourselves. We used to decompile the code and then learn how the products were made. But you are just so in a lab, you are getting ready-made code, everything there. So you can start looking that information, how you can search the information, and then you can search where you want to go for the internship, and I think those who are working as a data scientist they know. It just reminded me, apart from what I said, networking, it reminded me of my old days when I got passed out from here and then I did my diploma in software application engineering because I was from a mechanical branch. And at that time, we had this recession of 2001, where even people coming who got laid out from abroad were standing in the same row with us for the jobs. So it was a very hard time. So, and everywhere we went for applying for job, I'm sharing some experience which you can relate to later. So they ask for an experience, how much experience you have, and unless you get a job, how should we get the experience, right? So it was a bottleneck. So we formed a group of 4 people. What we did is, see, we are not getting job because we don't have experience. So we formed a group of 4 people from the same institute from which I had done the diploma in software application engineering. We approached the supermarket at that time in Dombivli. Its name was Sundaram Supermarket, I still remember. It's 25 years back. And we told them that we'll design your material management and billing software. We worked for free for 6 months. And we designed that software application, we implemented there. And then with that case study, we put it in our resumes. That see, we have made this software, it is running in this supermarket. We got a certificate and client satisfaction certificate and everything attached to our profile, which really added weightage to us because it showed our skills, something that you have made and is applicable and is running in the market. So that's how we got our first break. So don't wait for people to come to you to give internship, you can take your step ahead. Thank you. Hello sir, good afternoon sir.
लाइव चालू आहे कुठच्या आता Hello, my name is Suryakant. I'm from mechanical background and I have been in industry, in mechanical industry only after passing out in 99. So I would like to add in that, why I got my first job. Actually, I did my PG from College of Engineering Pune in thermal engineering after passing out from this college. And why did I get my first job is that in my resume, I had presented technical papers, okay? I did my industrial trainings, okay? And I got my first job before completing my post-graduation. Why did I get that? Because I did something very different from lot of general attributes what you show in your CV. Whatever quality of it, I mean, it may be very fancy and all, but what speaks is, what did you do in those technical papers? What did you study extra? That extra is something, that is required in industry. Thank you so much. Hello, sir. Good afternoon. I am Madhura Pandey from third year CSE department. I want to ask one question to you. My question is that how can we bridge the gap between what we learn in college and the skill required for internship or a job offers? See, again, you have to keep learning first thing, and since you want to go for the job, so you want to prepare for that. And IT industries, everybody agree that it's keep updating after every 6 months or 1 year. Today is some framework is there, tomorrow is another framework is coming. So you have to keep updated yourself all the time. Don't say that, okay, I know this framework or this programming language and then only I can go for job. It doesn't work. You never know that at the time of interview which framework person they will ask or which technology they will ask. So you have to keep updated yourself every time. That is one of the, I can say, suggestion. How can we bridge the gap between what we learn in college and the skill required for internship or job offers? That are currently demanding. There are two types of skill actually. First skill is the technical skill. Another one is the soft skill. Okay. So whenever we are done any technical skill, that is replaceable. But there are some soft skills also there. Like how you are doing any work, how you are presenting that work. Okay. That is a part of your integral part of your profession. And technical skill, don't stick with any particular technical skill. Just take a glimpse of the skills which are required for your industry. Okay. And start working on it. I'll share my experience. Would you like to hear about my experience? Yes, sir, why not? Yeah. Whenever I got passed out from the college, and in year 2002, at that time there was no campus, nothing like that. And we were looking for the job, and when we went into the market and come to know that whatever we had learned in the college, that was outdated. And there we started learning the new things. Like at that time the Java was in the book, so I started learning that thing. And while looking at the job, I didn't find any job in 6 months, 7 months. And I got one offer from a small company. There was around 5 people are there in that company. But the job is not related to technical. The job is related to data entry. Okay. And instead of waiting for something, I grabbed that opportunity and started my career as a data entry. I worked over 3 to 6 months over there. Okay.
And that project was over, and I got out of the company. But I did well in that project, whatever I did. And still side by side, I was learning my own skills and everything regarding that. There I learned side by side, I learned the communication skill, I learned the presentation skill. I also learned how to present project ourselves, how to carry ourselves. All these things I learned in that meantime. And later on, whatever I did was that small thing, that like a data entry job. So same, I was very acquainted with my owner, and we are very close to each other at the time. And he was an ex-Navy guy, and he got one project. He's from the Jalgaon, I think, my sugar mill is there. There was a ERP installation, and that code was written into Java. And he first of all, he called me and asked me, this is the project we are getting, we have to implement this. Would you like to work on it? So without thinking anything, how much is salary, whether it's nothing, I just said yes. Okay. And he onboarded me and I started working on it. And I haven't asked for any salary, anything like that. So, and later on, as my career goes, and then I learn a lot of things, and then I switch to next job, and then take up this. Then once I started, my visa started running, now it's working fine. So learning is that whatever opportunity you will get first hand in your hand, so do not wait for any perfect opportunity. Grab the opportunity, take the industry experience, and that experience will count for your future, and you work on it. So in this way, you can fill your gap. I mean, whatever skill you are learning and whatever you are wanting about industry. Okay? I hope you will satisfy. Thank you. In addition to his comments and suggestion, I would like to add one more thing. As I have interacted since yesterday evening with most of our friends, I could find that communication skills are very, very important. You know many technical things at times, but you can't express it. So there is a main lesson. So that you have to bridge. I remember one of my friends who was from Gujarati vernacular medium. He was along with us in diploma. So we used to make laughing stock out of him because he was trying to speak in English at that time since he was from vernacular medium. But by the end of our course, that was sandwich pattern 4 years course, wherein we had 1 year of internship in Mumbai. That was in Bahubai Autonomous College, that is in Vile Parli, Mumbai. So that friend of mine, at the end of 4th year, he was fluent in English. म्हणजे थोडीशी लाज सोडायला पाहिजे, कोणी हसत असेल तर हसू द्या. But we should try to speak in English because that is way of communication. No doubt for an engineer, drawing is an engineering language, but apart from that, you should be able to express yourself. That is most important thing, which I found in since yesterday. So one communication skill, first. Second, you told that how we can bridge the gap between what we learn and what exactly industry needs. Actually, what happens to subjects which we learn, we should try to correlate with industrial requirement. One, applied mechanics. Applied mechanics, it is for everybody. So what all things are there? Stress, strain, SFD, DMD, right? फिर लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो इंटरव्यू में पूछेगा ही बंदे को, तो ये सबको आना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि ये कहाँ यूज करूंगा मैं, कौन मुझे इसका कभी जिंदगी में यूज नेवर. You never know what all subjects are taught in the classroom are very much required in the industry. हम लोग को तब डिप्लोमा, when I was in diploma that time, it was told by our seniors, since I was from mechanical engineering, अरे electrical engineering का कुछ काम ही नहीं है mechanical engineers के लिए. It was super duper wrong. When I landed into industry, that time I came to know, since I started my career in design department,
wherein I was directly involved into designing machines. So then I needed to think how this machine will work, how this machine can be controlled. For that I need electrical power. पावर कैलकुलेशन तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसके बाद में उसमें इतने सारे फंक्शन है, उसका इंटरलॉक भी करना पड़ेगा। भले वो ऑटोमेशन इंजीनियर करेगा, लेकिन मुझे बताना है वो ऑटोमेशन इंटरलॉक्स कैसा करेगा, ये मशीन कब कौन सा फंक्शन करना है, उसके बाद में कौन सा फंक्शन करेगा, वो मुझे बताना है। मुझे मोटर कैसे चलनी चाहिए ये भी मुझे बताना है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाद में ड्राइव डिजाइन करेगा। तो ये सब स्ट्रीम्स आर इंटरलिंक्ड। जितना भी सब्जेक्ट हमको सिखाया जाता है वो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। कोई भी बोलता है ना ये ऑप्शन में डालो, नो यू कैन नॉट डू दैट। तो जब डिप्लोमा में मुझे बताया गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल के लिए जरूरी नहीं है, तो दैट वाज रॉन्ग। एंड व्हेन वी वर हैविंग for career guidance, we had one seminar. Sir, I'm not taking too long, right? Shall I continue? Okay, thank you. So that time we had our college, diploma college has organized a seminar for career guidance. So in that career guidance, one professor, what he came up and told us that he asked us, these are some papers, newspapers were kept on the table, and he told us, please come one by one and demonstrate how one can make aeroplane of that paper and who will make it as fast as possible. So everybody came, we also, I myself, I went and make the folded papers. तो त्रिकोणी वगैरे बनवतो ना आपण, तशा टाईपने बनवलं आणि मग आम्ही शूट केला। तर कोणाचा 2 फूट 4 फूट 1 मीटर 2 मीटर असे केले। तर तो बोला की दिस इज ओल्ड स्कूल थॉट ऑफ स्कूल, तो ते ये नाही चलेगा। तर त्यांनी काय केलं, तर आता मी बघा कसं करतो, म्हणजे त्यांनी आम्हाला सांगितलं, मी नाही ना, त्यांनी आम्हाला सांगितलं। तर त्यांनी काय केलं, तो पेपर होता चुरगळला आणि असा फेकला, दिस इज माय रॉकेट एरोप्लेन, असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं या पूर्ण। आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी आम्हाला काय सांगितलं की मेकॅनिकल मार्केटची रिक्वायरमेंट आहे, ही सुद्धा त्यांनी त्या सेमिनारमध्ये सांगितलं की मार्केटची त्यावेळेची रिक्वायरमेंट, जशी आताची आयटीची रिक्वायरमेंट आहे, आयटी इज इन बूम, इट्स ग्रोइंग लाईक एनिथिंग। Core fields are left behind, but still core fields are required. Civil engineers are required, mechanical engineers, electrical engineers are definitely required in the market. तर त्यांनी काय सांगितलं होतं की मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सोबत जर तुम्ही इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची जोड दिली, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, तर तुम्हाला मार्केटला ते गरजेची आहे। It is very much required that mechanical engineering with electrical engineers knowledge is most important. आता what I am doing right now is very same thing, but that mistake I got chance to rectify in my engineering. So I tried to grab some knowledge about electrical and automation, which subjects which had in our mechanical engineering that time. So I could gather that knowledge and use it. So it is my thing, my idea to relate what you study. The applied mechanics असेल, strength of machines असेल, theory of machines असेल, try to correlate. कुठे मगाशी मी जसं सांगितलं ना की शिलाई मशीन, तर these are you have to correlate. The theory of machines तुम्हाला शिकवलं गेलं, 4 bar mechanism, हे JCB वगैरे आपण बघतो, it is something like that only. मग तुमच्या इंजिनमध्ये 4 बार मेकॅनिझम आहे, क्रँक मेकॅनिझम, तर हे सगळं त्याच्यामध्ये यू हॅव टू, वी ourselves have to think, say man, these professors can teach you to certain level, they can take you up to some level, beyond that you have to go ahead. Nobody else can help you, you have to help yourself, that's it. Thank you sir. I
gentlemen. See, basics will be taught at your ground. This is your ground. ABCD will be taught at primary level. So whatever you are actually thinking of, I will be this one, I will be that one. See, that story never ends. Your aspirations will grow. Okay? It is like that कि मेरा ये align नहीं हुआ, मेरा सिर्फ English अच्छा है, मेरा I just speak English, so I will be business. It's a business language, and we need to learn that. That is the first thing. Your teachers are making a lot of efforts to make your communication. See, boss, your competition is not with here, not with Pusat, not with Pune, not with Mumbai. Understand? I was speaking with someone. कल तक बात कर रहे थे चैट जीपीटी एवरीवन विल टेक चैट जीपीटी व्हाट इज टुडे स्टोरी डीप स्टिक हार्ड इट सब चैट जीपीटी का जॉब खा लिया सो यू नीड टू बी लर्निंग ऑलवेज आज मुझे भी पता है कि मुझे पता नहीं क्या करना है बट आई नीड टू लर्न छोटा बिल्डर है उसको बड़ा बनना है कोडर है उसको बड़ा डेवलपर बनना है so these aspirations will grow you need to think what I want to be grow in that way but basics भूलना नहीं है मुझे अभी भी याद है I had some challenging time मुझे पहला क्वेश्चन पूछा गया था what is a computer if I would have failed at that time मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था I said computer is a language which can arithmetic and logical उस एक क्वेश्चन से वजह से आज मैं बड़ा हूँ So there are tough times. You need to learn, and this basic will be not taught. बाद में आपको खुद नहीं पढ़ोगे आपको. मैं नेटवर्क फील्ड से आता हूँ. So you need to learn those things. Basics will be always there. 7 layers. आज भी आपको by heart होना चाहिए. Today we are at 25, but internet started long back. आज भी वही basic चल रहे हैं. Okay, so basics will always remain same, and you need to think about that. आज हम लोग के सामने लोग जाते हैं मुंबई, पुणे और maybe you can say US, but आज भी वहाँ पे देखो CEO, who is the CEO of Google, who is the CEO of Microsoft. अरे ज़्यादा दूर मत जाओ अपने अकोला से लो विजय भटकर सर बोइंग के CEO अरे these people they came from ground so टेक्नोलॉजी वाली हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं कम्युनिकेशन आज हम लोग स्ट्रगल करते हैं बट यू गाइज हैव द बेनिफिट एंड यूज दैट बेनिफिट सो दैट इज आई कैन सी थैंक्स Thank you, sir. Your words are truly inspiring. Now, who's ready for the next question? Continue from there. Greetings to all the alumni again. I am Bhargavi Chandalia, a second year student from Computer Science and Engineering Department. My question is that apart from, as you told, communication skills are very important. So apart from that, what tools and technologies students can master for the competitive edge? So actually I am from mechanical, but I can definitely tell you from mechanical point of view. But my friends meanwhile they will think and they will come up with answer for you. अरे नहीं सर देखिए कैसा है ना कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ऑटो कैड इज वेरी मच एसेंशियल ऑटो कैड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स ये ना अपना बाजू में करते रहना है वो आप लोग जितनी स्किल्स जितने जल्दी एक्वायर करेंगे बाहर में आप अपने पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप्स पे डाउनलोड करके लो स्टूडेंट वर्जन जिसमें आप वो स्किल्स वो एक दिन में नहीं होगा 2 दिन में नहीं होगा 1 साल 2 साल में आप जब तक मार्केट में उतरोगे ना तब तक यू विल बी बेस्ट इन इट तो ये आपको आज से करना है नो मैटर्स योर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर पर तुम्हारा तो बात पता है तुमको क्या करना है हमको सब आना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे फाइनल ईयर मुझे सब आना चाहिए ऑफ कोर्स फ्रॉम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू माय फ्रेंड्स विल लेट यू नो अबाउट फ्रॉम CS पॉइंट ऑफ व्यू I will tell you from civil point of view. From civil point of view, so I'm basically into design. We do designing of industrial plants like refineries, power plant, fertilizer plants, or like that. So if you want to enter into design field, structural design field, you will have to know STAAD Pro, then SAP 2000. You can learn AutoCAD.
okay, now it is, I can say, for civil point of view, it is outdated. Everything will happen in 3D model environment. You will have to know Revit, you will have to know Tekla. Tekla is for steel, Revit is for concrete 3D model. And then you will have to know Naviswork also. It is a 3D model environment where this concrete and steel model will be compiled, and you can see whole plant. Like in old days, they used to make a model of cardboard. Now nobody makes cardboard model. You will have to make work in a 3D model environment. Wow. So finally, CS will answer that now. Okay. So okay, so IT I can speak about saying मैं एक thing clear करना चाहता हूँ. I know most of them are asking in terms of how to get your first break or how to crack the interview. So एक thing मैं basic clear करना चाहूँगा. When we go for hiring, okay, we know we are hiring freshers. We know we are not there to hire subject matter experts. So ये हमको पता है हम किनको hire कर रहे हैं, ठीक है? So one thing is, of course, you should know some good programming languages. But what we more look into, I'll make it clear. We look at banda, a person is how willing he is to learn in a skill. ठीक है? ये attitude होना बहुत जरूरी है. Because training तो हम दे देंगे तुम्हें, क्योंकि कोई भी companies hire करती है IT की specially, we give them training for 3 months on various technologies for which we have demand. So you should express your learning willingness to learn, good attitude, or programming languages अगर you want to know specific as of today, because मैं आज जो बोलूँगा 2 साल बाद relevant नहीं रहेगा या अगले साल भी नहीं रहेगा, because it's changing very frequently now. So as of today we have a huge requirement for Java microservices, Spring Boot, or even on Python. So these are technologies as of today. अगर आप सेकेंड ईयर में हो 2 साल बाद दिस may not be relevant. लेकिन जो बेसिक थिंग्स हम जब देखते हैं, so we look into as what I said, and also you should enhance your presentation skills. You should be able to express yourself in a better way, presentation skills, have good attitude and willingness to learn. अगर ये दिखता है हमें कैंडिडेट में, I think you can crack any requirement for freshers, because companies will train you on whatever technologies they need. I hope that helps. Thank you, sir. Think of this as a Hello. golden opportunity. I would like to add 2 points. Flexibility is very, very important. And timing and location wise. You don't say, okay, I want Pune, I want Bombay, Bangalore. So be open for that. These are the very, very, very important 2 points. Adding to that. Yeah. हेलो एवरीबॉडी, मैं आपके सामने कुछ अलग तरह का शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो एक चीज़ लैक रहती है, वो अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो आई एम श्योर द चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी ड्रास्टिकली इम्प्रूव. कई लोग हैं यहाँ पे पास सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, जैसा कि अनुज ने कहा कि हम डेवलप हमें पता है कि हमें केवल अच्छे बेस का स्टूडेंट चाहिए, इसके पास लॉजिकल पावर है, एटीट्यूड सही है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर इन योर हैंड. Okay, technology will change every 1 year, 2 year. तो आप ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते. अगर हम कोई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे 2 साल में चेंज रहेगी. लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स, your confidence, how confident, how many people in your opinion are confident to go onto the stage and talk non-stop for 5 minutes on a topic? I can tell you, at least when I was doing the engineering, maximum 2 मिनट हो जाता है. उसके बाद you are out of words. So ये चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव करें. प्रेजेंटेशन स्किल्स, इट्स इन योर हैंड. कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स. हम जब इंडियंस को हायर करते हैं, 80% ऑफ द इंडियंस लैक ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. आप अपने आप को जज करिए, आई विल नॉट जज यू. अगर आपके पास एक पैराग्राफ लिखने के लिए कह दिया जाए, एक पेज 5 मिनट के अंदर, उसमें कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स और कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे. स्पेलिंग मिस्टेक्स की सोल्यूशन आ चुकी है मार्केट में, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक जब यहाँ लोग बोलते हैं तो वो अपने आप देखते हैं कि, और लोग आपसे बोलेंगे नहीं, बट इट बिकम्स विजिबल एंड देन यू लूज द चांस और द एज ओवर द अदर पर्सन.
और तीसरी चीज, हाँ, कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं, बिकॉज व्हेन वी गो टू द मार्केट, ट्राई टू हायर द पीपल, वी जनरली हायर द पीपल हु शो द पास्ट दैट दे हैव द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री स्पेशली कंप्यूटर साइंस इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जब मैंने शुरुआत करी थी C++ से शुरुआत करी, it took me 2 years, I did not get a job. Okay, it's a fact. For 2 years I did not get a job. I was from BITS Pilani. यहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने BITS Pilani से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करी, बट स्टिल क्योंकि वो it was a recession time, I did not get a job in IT because I was a mechanical engineer and I did not have any specific skill. तो कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी है, और वो ऐसा सीखना है जो मार्केट में जरूरत है, और वो चेंज हो रहा है। तो C++ से कुछ नहीं होगा। आई डिड द कोर्स इन SAP. SAP वाज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। आज मैं SAP पे एक फ्रेशर की नौकरी लेना चाहूँगा, वो कर नहीं, लेकिन उस जमाने में वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो जब आप पास आउट होने वाले हो मार्केट में, उस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को पता करें कौन सी है, अपने सीनियर्स से नेटवर्किंग के थ्रू पता करते रहें, और उस कोर्सेज मार्केट में बहुत होते हैं। उसके आजकल तो यूट्यूब यूडीमी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके कोर्स करके बेनिफिट improve your chances. But right now your opportunity is improve your presentation skills, improve your dressing sense. Lot of Indians don't see the value in having the proper dressing. Okay, कितने लोग सही मोजे पहनते हैं, कितने लोग शर्ट और पैंट मैचिंग की पहनते हैं। We underestimate these things. तो ये दिखती नहीं है, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं, that brings the stuff. Thank you. देखिए, एक बात सिंपल सी है कि जॉब इज एन आउटकम ऑफ लर्निंग. हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग यू पीपल आर डूइंग ड्यूरिंग योर कैरियर ऑफ 4 years. This is a simple outcome. So many people are asking about the training, about the job, and ultimately, eventually, what we want from our college, to have a good job. Why we people are here, to have a good job. But मुझे ऐसा लगता है कि अभी करिकुलम को भी रिवैम्प करने की जरूरत है. हम कॉमन मैथमेटिक्स सबको पढ़ाते हैं सर, हम कॉमन मैथमेटिक्स सबको पढ़ाते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस वाले को जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना बहुत जरूरी है. आप अगर लीड कोड की बात करते हैं, हैकाथॉन्स की बात करते हैं, तो आई थिंक सो दिस इज द प्राइमरी व्हिच वी मस्ट हैव. तो आज की डेट में कॉमन सभी को एक ही टाइप की चीज परोसना, भाई हर चीज एक मर्ज के लिए हम दवा दे रहे हैं पैरासीटामोल, व्हाट डज इट मीन. ठीक है, तो हर चीज के लिए, जैसे अभी हमारे साथी लोग भी बता रहे थे कि मैकेनिकल के लिए अलग जरूरत है ना, सिविल के लिए अलग जरूरत है, ठीक है, पर करिकुलम को रिवैम्प करना बहुत जरूरी है आज की डेट में, और खासतौर से मैथमेटिक्स वाला पार्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स के बेस पे ही आप आगे जाने वाले हो. जितना मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, मैं बात करता हूँ एंड्रयू एंजन. एंड्रयू एंजन एक आपकी एक बुक आती है ना, और उसमें लीनियर रिग्रेशन का वो बात करता है, स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर. दिस इज वेरी बेसिक बुक. कितने लोग करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुद्दा ये है. और फर्स्ट ईयर से अभी कुछ पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इंतजार करना है. हम लोग कर सकते हैं, और इवन दो वी कैन थिंक अबाउट द पेड इंस्टीट्यूट. So thank you very much from my side. Thank you, sir. Think of this as a golden opportunity. Ask the question that will unlock your potential. Anyone interested from the boys' side? Please raise. Before going to next question, just I would like to add something into this. Before that, I would like to add here that since we were talking about enhancing our communication skill, presentations and everything, so I would like to, I don't know exactly. Okay, okay, thank you. अच्छा, तो सर मुझे ये पता नहीं कि presently how things are moving in colleges. Are their assignments are taken in soft or in hard copy? Yeah, there it is. So I would like to pitch this
that their assignment should be in form of PPT. Okay? Irrespective of stream. दोस्तों, ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा और चैट जीपीटी प्रोफेसर्स को भी आता है, उनको भी मालूम है। तो क्या ना कीवर्ड्स फटाक से कैच कर लेगा और आपने कहाँ से कॉपी किया वो भी पता चल जाएगा। तो ये जो आपके असाइनमेंट्स है जो पीपीटी में मैं क्यों बोला था, पीपीटी में कॉपी कर लो भाई, भले ही कर लो, नो इश्यूज, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन आपको करना होगा क्लासरूम में। सर तुम्ही नव्हता तेव्हा एक विषय आला कम्युनिकेशन स्किलचा, तर त्याच्यामध्ये मी असं एक पिच केलंय की यांचे असाइनमेंट्स आपण रिटर्न घेतो, राईट? ओके, अच्छा ठीक आहे. तरी सुद्धा in spite of that, what I would like to pitch is if at all they have to, we want to improve their, enhance their communication skill, त्यांचं स्टेज फेअर, मग त्यांचं प्रेझेंटेशन, we can give a topic. For instance, mechanical engineering मधला maybe types of couplings, ट्रान्समिशन, ठीक आहे? ट्रान्समिशन वरती त्यांना एक पीपीटी बनवायला पूर्ण वर्गाला द्यायची. ते आपापली पीपीटी बनवतील, मे बी इफ नॉट ग्रुप बनवूया 8-8 जणांचा आणि त्यांना एक पीपीटी बनवायला द्यायची. आणि त्या पीपीटी मधला that group is supposed to present in front of whole class. One skill पीपीटी बनवण्याची होईल, दुसरी प्रेझेंटेशनची, स्टेज फेअरची, इंग्लिश बोलण्याची, ही त्यांना मिळू शकते. जेणेकरून पहिल्या वर्षाचा जो मुलगा असेल तो बाय द एंड ऑफ 4th year he will at least attempt, he will try to attempt. Many of them will be pro in presentation. तर मला असं वाटतं we can do that. Thank you. आता कम्युनिकेशन स्किल आणि बाकी गोष्टींसाठी एक सांगतो की व्हॉट वी डीड when I was head of the department of mechanical engineering. So there is a common subject that is seminar in final year. So almost all the students of final year they present the seminar in next semester. What I did, I made it compulsory from the second year itself. Okay? So we formed according to toppers list. We appointed the guides of the third year. Third year students will get to the second year students. Final year students topper will guide to third year students. Accordingly, we used to manage the seminar of all the years. You will not believe, without guidance of any teacher. आता कुणाला किंवा आता तू गाईड आहे, आपण गाईड करतो, पोरगा त्यांच्याविषयी घातलं तयारी करायचं, ते लडकीमध्ये पुष्ट आहे. इट हॅपन, वी स्टार्टेड इट. पण आता नंतर काय वगैरे थोडंसं कमी झालं, हे झालं काय असतं थोडी नाही का की ऑलमोस्ट ऑल द स्टुडंट ऑफ फायनल इयर गोज इन लॉ हॉल दे विल बी ॲग्री. त्यांना जर म्हटलं तुमचा सेमिनार पुढच्या आठवड्यात आहे, तो आतापासूनच बेचैन होतो, मी आता कसं करू, काय करू, कसं करू. बऱ्याचदा हा प्रॉब्लेम फेस केला आहे की द स्टुडंट ॲट द मोमेंट व्हेन ही हॅज टू प्रेझेंट द सेमिनार, ही इज नॉट एबल टू अटेंड द सेमिनार. सर उद्या देतो, that is the fear. Problem काय, what we are getting the intake right now, it is from the rural area. I mean, unfortunate part is that starting from the primary education up to the high school, CBL is worst. It is worst. आता मला सांगा तुम्ही की फर्स्ट इयर किंवा फायनल इयरच्या मुलांना जर एक साधं अप्लिकेशन, I have a bunch of applications with me. The student writes principal PhD, bunch of application. मी पहिल्यांदा त्यांना राऊंड करतो, म्हटलं बाबा या नावाचा प्राणी इथे कोणीच बसून नाही, यू जस्ट गो आउटसाइड. तरी त्याला वाटते की मी काय चुकलो. आता माझे पिऊन बाहेर सांगायला लागला, मी तू प्रिन्सिपल गेलो म्हणजे प्रिन्सिपल आहे. सो कसा आहे माहिती आहे का की दे ऑल्सो दिस बॉदर अबाउट लँग्वेज, त्यांनाही शिकण्याची इच्छा नाही आहे. लायब्ररीमध्ये मुलांचं जाणं एकदम कमी झालेलं आहे. वी हॅव टू got the students to sign the register in the library. Once upon a time,
आपल्याला लाईन लावायला लागेल पुस्तक इश्यू करून घ्यायसाठी, बरोबर आहे? इफ आय एम नॉट रॉंग. आता तुम्ही विचारायचं की किती पोरं पुस्तक इश्यू करून घ्यायचं. वाचण्याची आवड गेलेली आहे. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वर्स्ट थिंग दॅट इज मोबाईल. कॅन यू इमॅजिन न्यूजपेपर हा मला तरी वाटतं की मोबाईलवरती वाचू दे. मी त्यात म्हणत होतो आम्ही पेपर इज इन हैंड, उसका फील ही नहीं आता. अब बुक्स का भी ऐसे हो गया, वो बुक्स पढ़ते ही नहीं है. मशीन डिझाईन पुस्तकाचं पीडीएफ अवेलेबल आहे. आता पीडीएफ मध्ये तुम्ही वाचू शकतो, तुम्ही इमेजिन करू शकतो का तुम्ही अपने पास में बुक्स रहा करते थे, हम पढ़ते थे, ये करते थे. सो many things are going to change right now. Now in such worst environment, now it is very difficult to get jobs. आता तरी यांना म्हणजे आता I am the worst person in the institute. I can say the villain for the student. त्यांना मारतो, रागावतो. You will not believe me. अजूनही पुराणा मारतो, मला वाईट वाटतं. Actually at this age एका शिक्षकाला ते शोभत नाही आणि मुलांनाही या बरोबरच्या मुलांसोबत ते करू नये. बट ऍडमिशनच्या वेळेस मुलांना सांगण्यात येते की बाबा हे प्रायमरी शाळा आहे, इथे नियमाप्रमाणे सगळं करावं लागेल. यू हॅव टू बी इन द ड्रेस कोड आणि बोलणं चाललं ते स्टार्टिंग फ्रॉम म्हणजे आता मी त्यात वर्स कंडिशन नहीं बोलता हूँ. हमारे बड़बड़े सर बहुत मेहनत करे हैं. आता जे खेड्यातली मुलं आहेत, छोटे गाव से लग के आते हैं. सो आई एम वेरी सॉरी, आई एम कंटिन्यू इन मराठी. देयर आर सम स्टूडेंट दोज आर नॉट एबल टू गेट मी, सो आई विल कंटिन्यू इन हिंदी इटसेल्फ. सो त्याच्यात बरेच बहुत सारे लड़के ऐसे जो रूरल एरिया से आते हैं. अहो ते मास्टरला गुड मॉर्निंग वापरून माहित नाही तर तो मुलांना काय शिकवणार. मॉर्निंग कधी म्हणायचं, गुड आफ्टरनून कधी म्हणायचं, गुड नून कधी म्हणायचं, गुड नाईट आणि गुड इव्हिनिंग कधी म्हणायचं. सो हियर वी कंडक्ट द क्लास फॉर 7 days फॉर फ्रेशर्स. फर्स्ट टाइम हम यही पढ़ाते थे, से मैं से गुड मॉर्निंग सर. So it is a lacuna with all Maharashtrians with specialty. They hesitate to wish. टीचर सामने से आते हैं तो देखता है कि मैं कैसे अवॉइड करूं, बाजू से निकल जाऊं. Whereas आपके समय में आप ऐसे नहीं थे. आप टीचर को फेस करते थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार सर, आप करते थे. अब ये क्यों था? क्योंकि उस वक्त आप लोग करेज था. अब अब आपने मुझे ज्यादा छेड़ दिया. So it will be a very strong statement. So as a, now let me speak right now. Please welcome sir. So now the principal Alumni Shwankiri is not before you. The president of Alumni Association is before you. I am very much in favor of the ragging. फर्स्ट ईयर में बटन लगाना कंपल्सरी था और सीनियर साथ थे तो बाजू में कर रहे थे ऐसे गुड मॉर्निंग सर बोलना जरूरी था. 90 राइट. अब वर्स्ट थिंग ये है, उस वक्त ये भी जमाना था कि हम हमारे माँ बाप की बहुत ज्यादा सुनते थे. उन्होंने अगर ये बोला था कि नहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेनी है, यस. आपको सिविल में ही लेनी है, यस. आपको पुस्तक में ही लेनी है, यस. अब जमाना बदल गया है. अब बार्गेनिंग लड़के करने लगे हैं बाप से. बोला तुम्हें लगता है तेरे भी शिकत में. बोला हीच गाड़ी, तुम्ही गाडी मागितली का घरी कधी? सायकल भी बड़ी नसीब से होती थी. So we are very fortunate to have such parents and such circumstances. तो हमारे पास वो नहीं था, वो अपने लिए बहुत बस बन थी. इनके पास ये सब कुछ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसी का ही नतीजा भुगत रहे हैं. एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब्स. ये अगर उनका सब निकाल देना, आई एम श्योर विद इन 2 years सिनेरियो विल बी चेंज. इट विल चेंज. आता मोबाईलचं काम करणार तर आपल्याला प्रॉब्लेम होतो. आम्हाला असं सवय झालं की नोटिसेस असो, पीडीएफ असो, नोट्सच्या. आता वी आर ऑल्सो हॅबिट टू सर्क्युलेट इन व्हॉट्सअप ग्रुप. नोटीस पाणी काय व्हॉट्सअपवर टाकते. ऑफिस पडणार, आम्ही काय पडणार व्हॉट्सअप नको. इट इज व्हेरी क्रिटिकल सिच्युएशन फॉर द टीचर्स.
आम्हीच म्हणतो मोबाईल इतका कशाला वापरतो आणि आम्हीच म्हणतो नोटीस पाहिजे का. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तर विद्यार्थ्यांना आता जेवढं काही तुम्हाला सांगत आहे, आता तुम्हाला राग येतो माझ्या टीव्ही मधून जेव्हा गेट आउट करून येतात अप्लिकेशन बरोबर लिहून, जोपर्यंत बरोबर लिहित तर मी अप्लिकेशन वापस करतो. काय म्हणाले, रिटन अँड स्पोकन शुड बी अप टू द मार्क, बिकॉज यू हॅव टू फेस द कॉम्पिटिशन नॉट इन इंडिया, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. त्यासाठी तुम्हाला आता तुम्ही बाकी सोडून कामाला कधी शिकवलं मी काही नाही, आम्ही खेड्यातून आणलं, मी आधीच आहे, मला इंग्रजी मराठीत मी शिकवलं आपल्या माऊली सरांना. सो व्हॉट, who stopped you to learn? Who stopped? So, I proudly say, yes, मी मराठीतून इंग्रजी शिकलो. ते आम्हाला म्हणायचं यू स्टँड मॅरेज, ठीक आहे, चालायचं असते. पण याचा अर्थ आपण नंतर काही शिकायचं असं होत नाही, तर तुम्हाला शिकण्यासाठी खूप जागा आहे. आणि सर प्लीज कंटिन्यू. ओके, आणखी सांगायचं म्हणजे आता यांच्यासाठी आम्ही एक, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करिक्युलम, एक इंग्रजीसाठी टीचर लावतो आणि वीकली 2 लेक्चर्स प्रत्येक सेक्शनसाठी कंडक्ट केल्या जातात. प्रत्येक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में इंग्लिश के क्लासेस होते हैं. आता सांगू का तुम्ही किती अटेंड करतात, क्योंकि उसके ऊपर पेपर नहीं होता है, वो काउंट नहीं होता है. Fine. We should be attached with the internal marks. Now, one department, I should mention it, computer science engineering department, they made it compulsory to the students of 3rd year and final year. ये छोटे-छोटे कोर्स जो होते हैं, NPTEL के कोर्स जो होते हैं, they made it compulsory until and unless the boy completes at least 2 or 3 course, उसके इंटरनल मार्क्स नहीं डिस्प्ले किए जाएंगे. अगर वो 3 कोर्स करता है तो उसको 2 मार्क हम ग्रेड देते हैं. अब भैया उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी अगर 3 निकालना है, तो थोड़ा सा क्या है कि तब वाटतं की भाई आप ज्यादा रूडली हो रहे हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ऐसा तो रहता है. स्टूडेंट्स है, लेट देम एंजॉय. लेकिन मैं यही बताता हूँ आपको कि आपको अभी कितना भी बेकार लगे कि बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा थोड़ी होता है ये कॉलेज में. बहुत सारे ऐसे सारे कॉलेजेस हैं उसके के आसपास ऐसे कॉलेज है कि वो गारंटी रहती है कि एडमिशन करो 4 साल बताओ यू विल गेट द डिग्री. हमारा उल्टा है, हम यही बोलते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो आपको कॉलेज करना ही पड़ेगा, क्लासेस करनी पड़ेगी, या तो एडमिशन मत लो. फिर भी एडमिशन फुल है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप पढ़ें. हमारे लिए मत करो, लेकिन आपके लिए करो आप. ठीक है, सो दिस इज माय हम्बल सजेशन. वर्ड टू प्रिंसिपल. सर, आपने जो बात कही है बुक्स के बारे में, so just I would like to share my own experience. When I was in Siemens and heading the planning department, our CEO always talk about the fundamentals of engineering. Whenever he comes to meeting, whatever the proposal we say, he said, from where shop? Did you study operation research? Did you study machine design? If it is not followed with the fundamental engineering principle, he said, your proposal is best for development. And that give me the habit that whenever I change my company, first I set up the library. So in Mahindra also, I had a book. 2 days back, my VP gave me the target that मेरा प्रेजेंट लाइन जो पिछले साल 3000 व्हीकल बनाता था, आज हम 8000 बना रहे हैं. It was just over 12,000. First I took the book of my 3rd year engineering, opened that, time study and all that, and then map and given my all subordinate. Let us prepare it. I will come back in next week. So books are very important. अभी बुक की वजह से मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि भाई यहाँ तो हम पढ़ते थे सिर्फ मार्क के लिए, 30-35 मार्क भी आ गए तो बहुत हो गया. बट यहाँ से पास होने के बाद जब मैंने पहला जॉब चालू किया तो मैंने मेरे पहले 3 साल के सैलरी में से एवरी मंथ मैंने एक बुक खरीदा है और वो पढ़ा है. तो यही आपको करना है, अगर सीखना है तो आपको पढ़ना है. वानखेड़े सरांनी ने सांगितलं ना, वानखेड़े सर ने जो बताया ना, उसमें मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स.
जो स्वतःची मदत करतो त्यालाच देव मदत करतो. गॉड हेल्प दोज हू हेल्प themselves. थँक्यू. That's truly inspiring, sir. यहाँ पे बहुत लोग कॉर्पोरेट लेवल से आए हैं, बड़े बड़े कंपनी से आए हैं. मैं आपको एक सिंपल थिंग समझाता हूँ. यहाँ मैक्सिमम रूरल से है. ये लोग जो जितनी भी टेक्निकल भाषा और ये सब लैंग्वेज वापर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर से भी जा रही है. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉमन सेंस जिंदगी में रखना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है. मैं टोयोटा के साथ पिछले 4 साल से जुड़ के हूँ. बिगर बोले विजिट करेंगे, सबसे पहले आपके टॉयलेट में जाएंगे कितनी गंदगी देखने के लिए, और वहां से हमारे को पेनल्टी शुरू होती है. तो आपको ये ख्याल में करिए, इंग्लिश आता, हिंदी आता, नहीं आता, वो सेकेंडरी है. और एक मोबाइल पे रील्स, फेसबुक वगैरह देखना ही मरेंगे जब तक के नहीं खलास होने वाली आपके रील्स. तो यहाँ पे समझ लो, मेरा भी बच्चा जो है वो बीए है. मेरे पापा डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर. पापा को बोला मेरे को वर्कशॉप डालना है 4 व्हीलर का. पापा बोले एमई कर ले, जॉब कर ले. फिर मैं बोला कि नहीं, मैं आरटीओ बनूंगा. आरटीओ बनना है तो मैं गया वर्कशॉप में काम सीखने के लिए, 4 व्हीलर के वर्कशॉप में. वहाँ पे देखा कि बहुत अच्छा काम है, आरटीओ के लिए सर्टिफिकेट लगता है. फिर नागपुर में मैं जहाँ पे काम सीखने गया, वो बंदा बोलता था 9:30 बजे आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ. वो भी सैलरी नहीं देता था. साल भर एज ए मैकेनिक काम करके मैंने 4 व्हीलर का वर्कशॉप किया. आपको खुद की अपॉर्चुनिटी तय करना पड़ेगा. कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट रहते हैं जो कंपनी में जाके जॉब ढूंढ लेते, कर लेते, लेकिन कुछ लोगों को अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता. तो ऐसा मत समझो कि मैं शिमला पिंपरी से हूँ या पुसद से हूँ या यहाँ और कई एक्सवाइजेड हूँ. बहुत अपॉर्चुनिटीज है काम करने वालों के लिए, लेकिन काम आपको सीरियसली करना पड़ता है. थैंक यू. एक बेसिक सांगतो सर, इंजिनिअरिंग ऑल दॅट बऱ्याच गोष्टी अवेलेबल आहेत. पण जर लाईफमध्ये खरंच सक्सेस मिळवायचं असेल तर त्याच्यासाठी सर्वात इम्पॉर्टंट थिंग जी आहे ती म्हणजे गोल सेट करणं. आर यू ॲग्री? टार्गेट अँड गोल, दिज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. त्याचे उदाहरण पण देतो एक सिम्पल तुम्हाला. एक गाव असतं छोटं, त्या छोट्या गावात एक लहान मुलगा असतो, तो तीर कमानीची प्रॅक्टिस करत असतो. एक छोटी वॉल असते, त्या वॉलवर चॉकनी गोल केलेलं असतं आणि त्याच्या एक्झॅक्ट मधोमध त्याचा बाण लागलेला असतो. त्या गावात एक गृहस्थ जात असतो, ते चित्र बघून तो फार इम्प्रेस होतो की कोणी मारलं हे, सेंटरला एक्झॅक्टली ते कोणी मारलं. तर तो माहिती मिळवतो, तो मुलगा येतो समोर की सर मी मारलं. तर तो म्हणतो की व्हेरी गुड, खूपच छान काम केलं. तू एक काम करू शकतो, तू माझ्यासमोर एक तीर मारू शकतो सेंटरला. तर तो तीर घेतो आणि मारायला लागतो. तर तो म्हणतो तू यातल्या कुठल्या सर्कलवरती मारणार आहे. तर तो बोलतो सर मी असं सर्कलवर नसतो मारत, मी पहिले तीर मारतो आणि नंतर सर्कल तयार करतो. आपलं आयुष्य बऱ्याचदा असं जातं की जिथे आपण जातो तिथे आपल्याला वाटतं की चला आपलं ते सक्सेस आहे, बट दॅट इज नॉट ऍक्च्युअली सक्सेस. आता एक दुसरा कन्सिडर करा विद्यार्थी, जो पहिले चॉकनी गोल करतो and then he try to practice to attain the center of that circle. आता या दोघांमधला जो फरक आहे तो तुमच्या गोल मधला, टार्गेट्स मधला आणि तुम्हाला जे मिळालेलं आहे पुढे यामधला फरक असतो. थँक्यू. मेंटेनन्स म्हणजे मेगाबाईटमध्ये मी मेंटेनन्स हेड आहे. तर माझ्या इंजिनियर जे आहेत, कुठलीही मशीन नवीन आली तर ते शॉर्टकट शोधतात इंजिनियर्स. मी त्यांना सरांनी सांगितलं की मॅन्युअल्स वापरायचं, म्हणजे बुक्स. तर वेगवेगळे मॅन्युअल्स असतात, इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल, ऑपरेशन मॅन्युअल आणि सर्व्हिस मॅन्युअल. म्हणजे तुम्हाला कुठला प्रॉब्लेम केव्हा सॉल्व्ह करायचा आणि कसा असतो हे इंजिनियर्स आता शॉर्टकट शोधतात. तर ते मॅन्युअल्स पूर्ण रीड करायचे, त्यामध्ये एव्हरी सोल्युशन मिळते. म्हणजे बुक्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. I'm not going to talk in perspective of academics and all. I'm going to tell you on the basis of angel investments I do in what you call AI and all. How many people of you know AI agents?
So you can, right now, I am interested in few startups which have built AI agents which are making money for themselves. You don't need, they learn, they employ. So AI agents, prompt engineering, and what you call NLP, natural language learning, that is above this thing. First start with the basic. You start using what you call prompt engineering today. You start using how to build AI agents. There are a lot of websites where you can just put in order and create an AI agent for your daily tasks. Okay? So if you don't do this, lot of majority of day-to-day tasks are going to be taken over by this AI agents now. Okay, and so first of all, you don't wait for 4 years what is happening. There are websites like MIT Online, Coursera and all, where you can learn this for 1,500 rupees and start using it today. Okay, what people are looking, if you are 400 people, don't expect 400 people are going to get jobs. Now you have to think like an entrepreneur from day one in your college. Okay, you need to take risks. In your lifetime, any human being, when in their lifetime they cry most when their parents go to drop them to nursery school, where they have to eat, sleep and come back, right? Then they go to KG1. In KG1 they say, यार nursery अच्छा था, खा पी के आते थे, यहाँ पे rhyme बोलना पड़ता है. फिर वो KG2 में जाते हैं. KG2 में बोलते हैं ABCD यार वही अच्छा था. So what does this teach you? Every milestone achieved is one fear conquered. So conquer your fears. Don't worry you will get a job or not. You can create your own jobs. You need to be alive. You can create your own avatars. Okay, someone was talking about reels and all, right? You can create your own avatars using AI, and they can be deployed 20 videos a day on educational and all. You can still make money. So if your aim is making money, it is very simple. But you need to figure it out from today, how you are going to align to it. Because 60% of what is this, let's say I'm a developer, real estate developer. For me, the foundation is basic. College is a foundation, like soft skills, friendship, alignment, network, how to get aligned to it. But there are other things you can do out of the syllabus, which are your very best, because at that time we had only very slow internet. Okay, dial-up lines. You have everything at your disposal. Now it's your zeal, aspirations, what you want to do, you have to achieve. Technicality, there will be a lot of things. There is people who tell, the guys who are working in the industry, they tell you learn natural language processing, large language model, short language model. These are terms. I am using that to invest in that. So sometimes you don't need to be very smart. You need to ride a bus which is going to a destination. हमेशा आपको होशियार रहने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी होशियार लोगों को पकड़ो, उनके बस में चढ़ के जाओ. ठीक है? तो don't fear for everything. Align to this. There are a lot of technical things. AI. Right now there is so much demand for prompt engineering, not only in the IT industry. Even in any industry there is a prompt engineer's requirement. Okay, there are a lot of things you can do using DALI, which is a video or this thing. Everyone is coming up with this. If you don't align to this, you will be obsolete. Okay, so don't wait for 4 years, what will I figure it out. There are Coursera, there are MITs, there are Harvard Online, all 1,500, 2,000 rupees, which you can easily do. So do it. A lot of people are ready to invest on you because India needs entrepreneurs, not the job seekers. Thank you so much, sir, for sharing this wonderful insight. Anyone is ready from boys' side? Please don't hesitate to ask. Just wait, mic will come to us. Good afternoon, everyone. My name is Lalit Uttamrao Rathod. I am from second year CSC department. Sir, my question is, what trends in the job markets the students should be aware from in upcoming years? In upcoming years.
most of the questions that are coming are how to find a job, right? And they are giving mic to guys जिनकी mics यहाँ पे है नहीं. So they are complicating with answers, okay? And they are not clearing the mic. I'll make it simple. Okay? I'll make it simple. Break down the problem. If you are looking for a job in any industry, right? First try and find out what is the entry barrier. If you look at, if there is one job, there are 100 people for that job. The first thing that company does is put an entrance test. Okay? The first thing you need to figure out how to clear that entrance. How to clear that entrance test. That is your first barrier. Thank you. Second thing, once you clear that entrance, right, you will have to go through 1 or 2 or 3 rounds of interviews. The first question that comes in any interview is introduce yourself. Now that is your opportunity when you have your rules to define yourself and the drive next 30 minutes. Understand one thing, the game of rule is no interviewer has more than 30 or 45 minutes or max 1 hour to finish that interview. And in that 30-45 minutes, he will judge you whether he wants to clear it or clear you to the next round. So, introduction, prepare your introduction well. Introduce yourself. Interviewer is not keen on understanding कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, family में कौन है, all that. That's okay. Finish that in 1 or 2 lines. After that, you need to introduce yourself, talk about your interest, and put some keywords in your introduction that basically should drive the interviewer to his next question. So what you are doing is killing the 30-45 minutes. 30 minutes, if you are able to kill with what is your interest, will make you successful in that interview. Are you guys following me? Okay? So that's your first opportunity, your introduction. Prepare your introduction well. Make sure you are leaving 2, 3, 4 keywords in that towards the end of your introduction so that drives the interviewer to the next question. That way, if you are able to kill 25-30 minutes of that 1 hour or 45 minutes, you are through. And then you talk about the project that you are doing and talk about one subject that is of your interest. Don't let the interviewer drive that interview, because then it will be very difficult for you. If you are able to drive that interview, when you answer that question, prepare it in a way, you need to put 1 or 2 keywords in your answer so that it drives to the next question. And that is very key. And if you are able to do that, the job is yours. And you need to prepare 1 or 2 subjects very well, which is of your interest. Does that help? And okay, to answer your question for which I came here, right? What will get me a job? I will second, I'm sorry, Arif's answer to that. When we go for interview or any experienced guys look for candidates from college pass out, they don't look for experts. But what they look for is the guy sincere about what he has done? So if you are talking about your project, right, make sure that if you are talking about some nut bolt or anything, there are 3 or 4 numbers in that. Make sure that you know to that level about your project. And then one subject throughout. You talk about laws, whatever it is, you bring that in your answer. That's very important. And you drive that interview for 30-45 minutes, job is yours. Thank you. What an enriching and inspiring session this afternoon. I will not take much of your time. Just one part. Everybody is having the same question related to the job, obviously. But इसमें सबसे पहला language is not the barrier. Say I am one of the national sales से तो मेरे साथ में काफी बड़ी टीम काम करती है. अभी इसमें जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस कितना है. खुद में कॉन्फिडेंस रखिए. Second thing what we do is only one part out of it, and that is related to whichever the subject you are learning, how better you are. आप कैसे हो उसमें? कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कभी-कभी तो मैं तो इलेक्ट्रिकल, एक्चुअली आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, बट सामने है कैंपस इंटरव्यू है. कैंपस इंटरव्यू में मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चूज करना है, बिकॉज द फील्ड इज इलेक्ट्रिकल अल्टीमेटली. सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आई डू, electrical से related subject, maybe it could be the motor or it could be any other subject जो मुझे भी पता नहीं है. Literally I don't know lot of things about the electrical motors, electrical machines, how it works. But we ask the question relevant to that particular topic.
और वो टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ डीपली यू आर गॉन इनटू योर टॉपिक। लाइक ही टॉक्ड अबाउट द सिंसियरिटी, कितना सिंसियर आप अपने जॉब में हो, अपने वर्किंग में हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच वी लुक आफ्टर। सेकंड थिंग, झूठ मत बोलो, नहीं पता है तो ना बोल दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिखावा मत करो। क्या दिखावा मत करो? इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में बात करो, मराठी में बात करो, नो इश्यूज, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। Communication is all about only one thing, passing on the clear message from one part to the another part. So that is something which is called as the communication. Are you getting it? So next part of it, कभी-कभी हम क्या करते हैं ना, शायद इंग्लिश नहीं आती है, बट इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं एंड कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसकी नजरों में कहीं ना कहीं ये आता है कि अरे भाई इसको तो ये क्लाइंट नहीं है कि इसको बोलना क्या है। सो बेसिकली बी व्हाट यू आर। ओके, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी चीज बोली है। सो ड्रेसिंग सेंस में कुछ आपको कोई हैव अंडर दिस कोट एंड एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एटलीस्ट फॉर द पीपल लाइक अस। वी डोंट सिलेक्ट बेस्ड ऑन दैट, वी सिलेक्ट ऑन द नॉलेज व्हाट ही इज हैविंग, इवन द कॉन्फिडेंस व्हाट ही इज हैविंग। उसमें विलिंगनेस है या नहीं है आगे बढ़ने के लिए, आगे और कुछ करने के लिए। So these are the only things. Dressing sense में you have to have a basic shirt, pant आपका जैसा भी है, properly in रहे, चीजें आप presentable हो. That is the most important part. Okay. Now another part I want to ask all of you. आप में से कितने लोग सिर्फ टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हैं? अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेल्स या मार्केटिंग में काम करना चाहता है? Anybody? Who can raise their hands? See, I'm talking about the opportunity, so थोड़ा सा समय ले रहा हूँ सर। कौन सेल्स और मार्केटिंग में काम करना चाहता है? एक, बस, दो, तीन। ये हमारे कितने स्टूडेंट्स होंगे? क्या कैपेसिटी है ऑडिटोरियम की? कैन समबडी? 742। आउट ऑफ दैट 3 या 4 या 5 ज्यादा ज्यादा 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे। अच्छा, व्हाई इज इट सो? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो परचेस में काम करना चाहते हैं? नोबडी। ओके, प्रोडक्शन? ओके, चलिए 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, फिर लिमिटेड है। आरएनडी में कितने लोग काम करना चाहते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, बाकी सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? इज इट सो? ओके, गुड। Let me tell you one of the part. See, क्या है ना कि whenever we take the interview, हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं। डिजाइनिंग में जाना बहुत अच्छी चीज है, ऑब्वियसली डिजाइन्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें टेक्निकल स्किल्स भी होती है। बट मुझे एक बात बताइए, आप में कितनी भी स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स कितनी भी रहे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी आपने डिजाइन कर लिया हो, वो जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया है उसको बेचेंगे कैसे? How will you sell it? It has to be cost effective also. So how will you do it? See, again, आपको वो express करते आना चाहिए. So even if it is a sales, now in today's time, it's not just only a sales, it's a technical sales. Please try to understand. Your technicalities are going to be most important into the sales part also. So अगर कोई भी चीज सेल करना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी बना लिया है, अगर सेल करना है तो आपको अल्टीमेटली क्या लगेगा? सेल्स एंड मार्केटिंग। बट सेल्स एंड मार्केटिंग कैन आई गो एंड जस्ट ओनली टॉक अबाउट ओके दिस इज द प्रोजेक्टर एंड ये प्रोजेक्टर है, मुझे बेचना है। कैन आई सेल इट लाइक दिस? आई विल हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स, आई विल हैव टू टॉक अबाउट द यूएसपीज, आई विल हैव टू टॉक अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। उसके लिए मुझे प्रोडक्ट पता होना जरूरी है। So your technicalities are getting applied into the sales also. If you talk about purchase, again the technicalities comes into the picture. It could be purchase, it could be sourcing, different names रहते हैं. So basically, don't hesitate to opt any of the job profile. Say I work into right from R&D to after sales support, installation commissioning, to production, to purchase, to product management, to up to right now I'm into the sales. So it's a versatility which comes into, and कोई भी अपॉर्चुनिटी है, छोटी या बड़ी कोई भी नहीं है।
सो जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। हर किसी में कोई ना कोई स्किल सेट है। आज की डेट में सेल्स करना है, आप घर पे भी निगोशिएशन करते हो, नहीं सब बता देते हैं, गाड़ी के लिए निगोशिएशन होता है, तो उसी तरीके से निगोशिएशन हर जगह पे एप्लीकेबल है। ये सारी चीजें, ये सारे गुण आप में हैं। सो कोई भी फील्ड है, गेट इनटू इट सो दैट द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल गेट इंक्रीज ऑन द फील्ड। थैंक यू वेरी What an enriching and inspiring session this has been. Actually, one more thing, since this interview part is actually माझा एक अनुभव सांगणार आहे. When I was in diploma and we were having employee training and it was for Mahindra & Mahindra tractor division that is in Kandivali, Mumbai. So there we had a written test. Around about 30-40 guys have appeared for this particular session. Around about 16 guys were selected for group discussion, that is GD, group discussions, and then after 4 were selected for personal interview. So this was the way in which most of the companies move ahead. And उसमें क्या हुआ था कि there were different departments of Mahindra & Mahindra tractor division, like machine shop, assembly shop, QC, low cost automation department, PPC, purchase department. So these were the various departments for the interview. And that time, one question was asked by an interviewer, and that was for QC department. That QC was he asked, I am from QC and I am here to select candidates for QC department. So that time I was not having any inclination for QC. But when he asked me, are you willing to work in QC department? That time I told them, yes, this is my first love that I want to opt. यही बोलना पड़ता है, यही बोलना चाहिए। आपका चॉइस कोई भी रहे, लेकिन जब सामने पता चलता है कि ये इंटरव्यू आपको डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए है, तो आपको डिजाइन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके जाने चाहिए। और जब वो पूछता है, भले आप सेल्स का आपके दिमाग में कुछ भी है, बट यू वांट फर्स्ट रेट और आपको चांस मिलता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू फेस करने का, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। और उसको मैं यही ढूंढ रहा था, मुझे डिजाइन में ही काम करना था, मैं डे 1 से डिजाइन का ही सोच रहा था। ये कॉन्फिडेंस जब सामने वाले को आता है, तब आपने 2-4 क्वेश्चन ना भी दे दिए तो बोला भाई साहब इंटरेस्टेड लग रहा है, भाई साहब इंटरेस्टेड लग रहा है, तो इसको चुनना जरूरी है। तो ये बहुत ही कुछ चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो आप लोग भी इस तरह शायद यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे पास सेमिनार फाइनल तो सेमिनार दिया मैंने फिनिशिंग से और बड़े और उन्होंने बाद में बोला कि सेमिनार बहुत अच्छा हुआ है, तो डेवलपमेंट एंड आई कांटेक्ट, सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फीडबैक आई गॉट। सो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डोंट ट्रीट इंटरव्यू सर, ट्रीट इट एज अ डिस्कशन विद द इंटरव्यूअर एंड मेंटेन द आई कांटेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आणि तुम्हाला जर जॉब लागला तर 6 महिन्यात जर नवीन पॅकेज जास्त भेटते आहे तर जॉब चेंज करू नका। पहिले तुमचे 5 वर्ष एका जॉबला द्या, स्किल सेट डेव्हलप करा, ते 5 वर्ष तुम्हाला 25 ते 30 वर्ष आरामात खाऊ घालतील, हे लक्षात ठेवा। कारण नवीन जनरेशन तुम्ही जसे रील बदलताना तसे जॉब बदलता आहे, ही नवीन जनरेशनचा तुमची जनरेशनच तशी आहे, त्याच्यामुळे पहिले आपला स्किल सेट पूर्ण डेव्हलप करा। कोणताही जॉब जरी धरला तर त्याला कंप्लीट डेडिकेशन द्या, त्याच्यात तुम्ही डेव्हलप किती होता 5 वर्ष त्याला चांगलं द्या,
तुम्हाला नंतर पगाराचा विचार करायचा नाही स्टार्टिंगला. नंतर तुम्हाला त्याच याच्यावर पुष्कळ जास्त पगार वगैरे मिळेल. ज्याला जॉब करायचा आहे त्याला, आणि ज्याला बिझनेस पण टाकायचा असेल तर त्या फील्डमध्ये जा आणि 5 वर्ष त्याच्यात घाला. पूर्ण खालपासून वरपर्यंत फंडामेंटल पासून हायर पोस्ट पर्यंत स्टडी करा. त्याच्यानंतर त्या फील्डमध्ये जॉब करायचा असेल तर जॉब करा, बिझनेस करायचा असेल तर बिझनेस करा. थँक्यू. बघा, सर्वांनी आपल्याला खूप ऑनरेबल स्पीकर्सनी मोटिवेट केलेलं आहे आणि सर्वांनी उद्या काय करायचं हे सांगितलेलं आहे. पण काही काळ थोडासा टीचरचा एक्सपिरियन्स होता. सरांनी फार जवळच्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत की आमच्याकडे असं म्हणायचे जीपीला सगळं दगड आहे, असे तसे, आणि तेच विद्यार्थी घडवायचे असतात. तर तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, उद्याचं सांगितलेलं हे बिलकुल ध्यानात ठेवा. पण आज तुमची मन आणि बुद्धी सध्याशी कुठे हे स्वतः प्रत्येकजण चेक करा. तुम्ही एका मिनिटात असं म्हणतात, अभ्यास असा म्हणतो की 1 मिनट में 25 से 30 हमारे संकल्प या विचार चलते रहते हैं माइंड में. उसमें से कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, कितने व्यर्थ ये होते हैं कि आप हर एक चेक करो अपने आप में और फिर देखो कि भी हम पॉजिटिव कितना कर रहे हैं या आवश्यक विचार हमारे कितने अभ्यास करते हैं. आप कोई मूर्ख नहीं है. आपको एक आधी नोट दी जाए, मान लो 100 की नोट निकाले और आपको बोले कि 500 की नोट है, आप ले लो, कल मेरे को 500 वापस करना, आप क्या बोलोगे? तो इतने तो आप बेवकूफ नहीं हो. लेकिन हमारा मन बुद्धि कहीं और जगह पे हम डाइवर्ट करके रखते फालतू बातों में. तो आज हर सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट लो और वो चीज को अच्छे से अच्छा करो. यही बोलना है कि ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे और अपना जो गोल है उसके ऊपर में, और टाइम वेस्ट मत करो. बस इतना ही कहना है. और बस. What an enriching and inspiring session this has been. A heartfelt thank you to all our esteemed alumni for sharing their insights and experiences. As they say, wisdom is knowing what to do, what to do, virtue is doing it. Thank you for guiding us toward wisdom. This has been more than an interactive session. It's been a masterclass in life, learning and growth. Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. Today we have all been blessed with a sunrise of wisdom and opportunity. A big thank you to our faculty and organizers for making this event possible. And to my fellow students, your energy and thought-provoking questions made this session really engaging. Before we conclude, I is arranged in front of the auditorium. We hope you enjoy this time to reconnect. So I think 1 hour is not sufficient for the discussion. So I request all the August gathering here, please spare some time for the next visit so that we'll be able to have a more discussion with the students. I want you to be in the campus. Please, it is my humble request and standing invitation to all of you. कारण अभी भी दिल नहीं भरा है. कुछ लोग तो अभी उनके पास तो माइक भी नहीं गया है, तो वो तो उसका तो पहले नंबर पे है. डिपार्टमेंटल विजिट में इंटरेक्शन है. वन कॉल होगा वहाँ पर. आता चहा घ्यायचा, त्यानंतर सेंट्रल कॉम्प्युटिंग फॅसिलिटीला व्हिजिट आहे आपली, त्यानंतर इथे कल्चरल प्रोग्राम आहे तुमच्यासाठी. सो थँक्यू गाईज, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Students are requested to be please seated here. आता कल्चरल Students can go home. ज्यांचे क्वेश्चन्स बाकी आहे, उद्या डिपार्टमेंटल व्हिजिट आहे, तिथे तुमचे क्वेश्चन्स यू विल गेट द आन्सर्स फॉर दॅट. ओके, Students can go. यू वेट फॉर